हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लैट 2024 पीजी का पेपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे +1 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके डिडक्शन हो जाएगी -0.25 मार्क्स। एंड अगर कोई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। 2 आवर्स का पेपर रहेगा और मैक्सिमम ऑब्वियसली 120 मार्क्स रहेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चंस है। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था पैटर्न पिछले कुछ सालों से यही आता है कि एक पैरा दिया जाता है आपको और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट पैरा है, An unpleasant tussle ensued between the Tata Sons and Cyrus Pelonji Mistry in October 2016, when Mistry, who was the sixth chairman of Tata Sons, was ousted from the position of executive chairman of Tata Sons Limited. CPM took over the chairman in 2012 after Ratan Tata announced his retirement. Tata Group's patriarch Ratan Tata had personally asked Cyrus Mistry to resign as chairman of Tata Sons as the board had lost faith in him, but his refusal led to removal via majority vote. Cyrus Investments Private Limited and Sterling Investment Corporation Private Limited belonged to Saporji Pelonji Group, in which CPM held a controlling interest, about 2% of the issued share capital of Tata Sons. 7 out of the 9 directors of Tata Sons voted for CPM's replacement after Farida Khambata abstained and Mistry was declared ineligible to vote as he was an interested director. Mistry challenged his removal, accusing the boards of mismanagement and of oppressing minority shareholders. However, the National Company Law Tribunal (NCLT) rejected his petition. After this, Mistry challenged his removal in National Company Law Appellate Tribunal in Clat in 2018. And Clat order restored Mistry as the group's executive chairman. Tata Sons challenged the NCLAT order in Supreme Court. CPM also challenged the order for few more relief. Supreme Court stayed NCLAT's order restraining Cyrus Mistry as executive chairman of Tata Sons and restoring his directorship in the holding company as well as 3 groups of companies, with a preliminary observation that in the first impression of the order was not good and that the tribunal could not have given consequential relief that had not been sought in the first place. Ultimately, the Supreme Court decided the case in favor of Tata Sons. One of the issues decided by Supreme Court was that whether the case was fit to be qualified as a situation of operation and mismanagement under Section 241 of Companies Act 2013. On this issue, the Supreme Court observed that unless the removal of the person as a chairman of a company is oppressive or mismanaged or done in a prejudicial manner, damaging the interest of the company, its members, or the public at large, the NCLT cannot interfere with removal of a person as a chairman of a company in a petition under Section 241 of Companies Act 2013. This case highlighted the point that an executive chairman does not have sovereign authority over the company. In corporate democracy, decision making always remains with the board as long as they enjoy the pleasure of the shareholders. Likewise, an executive chairman will continue as long as he or she enjoys pleasures of the board. An assumption by the executive chairman that he or she would have a free hand in running the affairs of the company is incongruous to corporate governance and corporate democracy. The tribunal held that the concept of free hand rule is antithesis to the collective responsibility and collective decision making. तो ये एक्सट्रैक्ट जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया है एंड इसके बेसिस पे अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, द पार्टीज इन दिस केस अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच द फॉलोइंग प्रोविजन। अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्टली आपको पैरा में नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये कोई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं है जिसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। बट हाँ, आपको पैरा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट कैसे अप्रोच किया है पार्टी ने, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो अभी किस लेवल पे है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब आप पैरा पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा पहले वो एनसीएलटी के पास गए, एनसीएलटी से एनक्लैट के पास गए, अब एनक्लैट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप किसके बेसिस के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो आप ये प्रोविज़न आप पता ही नहीं पाओगे कि डायरेक्टली किस प्रोविज़न के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। तो पैरा पढ़ना भी ज़रूरी है, ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है पैरा में, क्योंकि आपके पास लीगल क्वेश्चंस है, नीचे आपको पैराज में आंसर नहीं मिलेगा। पहले हमें दिया है अपील अंडर सेक्शन 423 ऑफ कंपनीज एक्ट, देन है क्लास एक्शन सूट सेक्शन 245 में, फिर है स्पेशल लीव पिटिशन 136 में, या अपील अंडर सेक्शन 421 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। अपील अंडर सेक्शन 423, यस यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज 423 खुद ही कहता है कि अगर आप किसी एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और टाइम लिमिट भी दिया है। इसकी टाइम लिमिट मुझे कौन बताएगा? तो टाइम लिमिट है 60 डेज़ कि आप 60 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हो एपलेट कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। लेकिन इसके प्रोविज़ो में आपको टाइम एक्सटेंशन की भी बात करता है कि अगर 60 डेज़ में आप नहीं फाइल कर पाते हो तो और एक्सटेंशन मिलता है टाइम का बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर सफिशिएंट कॉज हो तो उसकी टाइम लिमिट किसी को पता है? उसकी है नेक्स्ट 60 डेज़, मतलब 60 डेज़ आपको वैसे टाइम लिमिट है, और आपके पास अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो आपको प्लस 60 डेज़ का और टाइम सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। क्लास एक्शन सूट जो है वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगती है, जो कि कुछ मेंबर्स या डिपॉजिटर्स करवाते हैं अगर कंपनी कुछ ऐसा गलत करती है तो, मतलब कुछ मेंबर्स एक साथ मिलके कंपनी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी को। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन मुझे ये कौन बताएगा कि एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए टू फाइल एन क्लास एक्शन सूट? अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसे। इसके अलावा मुझे अगर आप बता पाओ तो फॉर्म नंबर भी बताने कि किस फॉर्म में ये फाइल किया जाता है, कौन से फॉर्म नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं एसएलपी की अंडर आर्टिकल 136। तो एसएलपी एक स्पेशल पावर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो चाहे तो किसी भी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर या किसी सेंटेंस से किसी भी मैटर पे एक्सेप्ट रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट अपील हियर कर सकते हैं। ये जनरली यूज़ किया जाता है तब जब आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती या आपके पास अपील की कोई राइट नहीं होती तब। लेकिन अब हमारे इसमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमारे पास राइट दिया हुआ है 423 ऑफ कंपनीज एक्ट में, इसीलिए एसएलपी इसमें यूज़ नहीं की जाएगी, पहले राइट अवेल करते हैं। तो राइट 423 ही है। वैसे एसएलपी जा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास राइट है तो एसएलपी नहीं लेते हैं। और लास्ट आपका दिया है अपील अंडर सेक्शन 421। तो अपील 421 में एनसीएलटी से एपलेट ट्रिब्यूनल जाते हैं, मतलब एनसीएलटी से एनक्लैट जाते हैं, ना कि एनक्लैट है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये भी गलत है। और इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपील अंडर सेक्शन 423 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड क्वेश्चन है, रूल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी इज गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन सेटल्ड इन वेरी ओल्ड लीडिंग केस ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल in India, which case diluted the majority rule and held that interest of company was above the interest of its shareholders, either majority or minority. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज नेव्यू इंडिया। पर फोर्स वर्सेस हार्बोटल पे मैंने एक एनिमेटेड केस लॉ की वीडियो बना रखी है,
तो अगर आप इस केस को और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट एंड आई रियली होप कि आप ये देख के ये केस लॉ बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while recommending separation of the roles of non-executive chairperson and managing director or CEO, the Kotak Mahindra committee quoted the following text: given the importance and the particular nature of the chairman's role, it should in principle be separate from that of the chief executive. If the two roles are combined in one person, it represents a considerable concentration of power. This quote refers to which of the following committee report? कोहेन कमेटी रिपोर्ट, कैडबरी कमेटी रिपोर्ट, हैम्पल कमेटी रिपोर्ट या नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है कैडबरी कमेटी रिपोर्ट। एंड इसका कैडबरी चॉकलेट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बनाई गई थी। हेड करा था सर एड्रिन कैडबरी ने, इसलिए इसका नाम कैडबरी कमेटी रिपोर्ट रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग शेयर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 244 फॉर अप्लाइंग फॉर रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वाला ही, मेंबर्स नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी or 10% of total numbers of its members, whichever is less, or any member or members holding not less than 10% of the issued share capital of the company. हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये आप ये मत सोचना क्लास एक्शन सूट और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दोनों सेम होते हैं, इसलिए आपको आंसर मिल गया ऊपर वाला। दोनों ही अलग चीज़ होती है एंड इसीलिए आप इस पर कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेटमेंट्स दिए, बताना है कौन सा ट्रू एंड कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, पावर टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट which were vested by section 402 of 1956 act in high court have now been transferred to national company law tribunal by section 242 of 2013 act. और स्टेटमेंट 2 है, सेक्शन 242 डज नॉट एम्पावर नेशनल कंपनी लॉ appellate ट्रिब्यूनल to grant relief by way of prevention of apprehended mismanagement of the company due to material change which has taken place in its management or control. तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहला गलत है क्योंकि 402 में कंपनी लॉ बोर्ड होता था जिसको पावर दी गई थी टू ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो कि अब NCLT को मिल गई है। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि उनको पावर दी गई है कि वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं अंडर सेक्शन 242 ऑफ 4 इफ़ इट अपीयर्स कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो जस्ट एंड इक्विटेबल चीज़ है तो वो एप्रीहेंडेड उस पर भी ऑर्डर दे सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा चलते हैं, ये पैरा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पैरा है हमारा, अलिस्टर हटसन इन हिज बुक सिक्योरिटीज़ लॉ फर्स्ट एडिशन स्वीट एंड मैक्सवेल 2008 at page 342 refers to restricted offers and noted that there is no contravention of section 85 of FSMA 2000 if the offer is made to or directed at fewer than 100 persons other than qualified investors as per EEE state. The purpose underlying that exemption, the author says, is mainly the fact that the offer is not being made to an appreciable section of the public, such that the policy of the prospectus rules generally is not affected. Further, the author says that self-evidently, while an offer to 99 ordinary members of the public would be within the literal terms of the exemption, it would not be the sort of activity anticipated by legislation. Moreover, if a marketing campaign were arranged such that the ordinary members of the people were approached in groups of 99 people at that time in an effort to avoid the prospectus rules, then
that would not appear to be within the spirit of regulations and might be held to contravene the core principle that a regulated person must act integrity. I may therefore indicate, subject to what has been stated above, in India that any share or debenture issued beyond 49 persons would be a public issue, attracting all the relevant provisions of SEBI Act, regulations framed thereunder, and the Companies Act pertaining to public issue. Facts clearly reveal that Saharas have issued securities to public more than the threshold limit statutorily fixed under the first proviso to section 67(3) and hence violated the listing provisions which may attract civil and criminal liabilities. Principles of listing, which I may later on discuss, is intended to assist public companies in identifying their obligations and responsibilities, which are continuing in nature, transparent in content, and call for high degree of integrity. Obligations are imposed on the issuer on an ongoing basis. Public companies who are legally obliged to list their securities are deemed to accept the continuing obligations by virtue of their application, prospectus, and subsequent maintenance of listing of an recognized stock exchange. Disclosure is the rule, and there is no exception. Misleading public is a serious crime which may attract civil and criminal liability. Listing of securities depends not upon one's violation but on statutory mandate. ये एक्सट्रैक्ट भी एक केस लॉ से लिया गया है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, एंड इस पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. तो हमारा पहला क्वेश्चन इस पैरा से रिलेटेड है. Which among the following is not considered as prospectus under the Companies Act 2013? तो ये थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये टोटली लीगल क्वेश्चन है अगर आप देखो तो. प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में, मुझे कौन बताएगा? सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज प्रोस्पेक्टस or red herring prospectus or shelf prospectus, notice, circular or any advertisement or such documents inviting offers from public. तो हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी कवर हो गया, रेड हियरिंग भी कवर हो गया, एंड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक भी कवर हो गया, विच मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में. वैसे अगर आपको डेफिनेशन ना भी याद हो तो आपको पता होगा प्रोस्पेक्टस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को दी जाती है ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करे. लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट अपने नेम से ही बता रहा है कि वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन्वेस्टर्स को देते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट होता है एंड वो रिस्ट्रिक्ट होता है कुछ नंबर्स पे. तो क्या मुझे कोई बताएगा कौन से नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स को हम ऑफर कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड कौन से सेक्शन में प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट है सेक्शन 42 में, एंड मैक्सिमम 200% को दिया जा सकता है एक बार में, एक फाइनेंशियल ईयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, सहारा इशूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इसके लिए आपको केस पता होना चाहिए कि केस में क्या था, इसीलिए केस लॉज और रीसेंट केस लॉज, कुछ ऐसे लैंडमार्क केस लॉज भी आपको पढ़ना ज़रूरी है क्लैट के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, द कंपनी इशूड सिक्योरिटीज इन वायलेशन ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्होंने पब्लिक इशू का भी वायलेशन किया, एंड सेबी डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 रेड विथ इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर गाइडलाइंस 2009 दोनों के ही वायलेशन किए हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सहारा केस हेल्ड, सेबी बीइंग अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटर डज नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड एडजुडिकेट
As per Companies Act and SEBI Act 1992, SEBI has jurisdiction over both listed companies and companies which intend to get listed. Obviously इसका करेक्ट आंसर हमारा बी ही है, क्योंकि सेबी के पास दोनों की ही पावर होती है रेगुलेट करने को, एक पब्लिक कंपनीज यानी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड दूसरी वैसी कंपनीज जो कि लिस्ट होना चाहती हैं. तो सेबी को दोनों की पावर है, तो सेकंड इज द करेक्ट. थर्ड भी देख लेते हैं. सेबी हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ओवर पब्लिक इशुएंस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज विच इज़ रॉन्ग. पावर ऑफ सेबी सुपरसीड दैट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप मिनिस्ट्री के ऊपर कैसे जा सकते हो, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट बाय प्राइवेट कंपनीज? मैंडेटरी ग्रांटिंग बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यूज़ ऑफ पब्लिक मीडिया टू एडवर्टाइज द इशू. ये तो एकदम ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है, अब तो बिना सोचा, क्योंकि आप पब्लिक को ये ऑफर ही नहीं कर सकते प्राइवेट प्लेसमेंट, तो एडवर्टाइज कैसे करोगे? पोस्ट इशू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, नो. एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी लिस्टेड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है तो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है. चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं. नेक्स्ट पैरा है हमारा, द एम ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू सिक्योर जस्टिस और टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. These rules can operate only in areas not covered by law, validly made. In other words, they do not supplant the law of the land but supplement it. The concept of natural justice has undergone a great deal of change in recent years. In the past, it was thought that it included just two rules, namely, no one shall be judge in his own case, nemo debet esse judex propria causa, and no decision shall be given against a party without affording him a reasonable hearing, audi ultram partem. And please pardon me for my pronunciations, okay? Moving on. Very soon thereafter, a third rule was investigate, and it is that quasi-judicial inquiries must be held in good faith, without bias and not arbitrarily or unreasonably. But in the course of years, many more subsidiary rules came to be added to the rule of natural justice. Till very recently, it was the opinion of the courts that unless the authority concerned was required by the law under which it functioned to act judicially, there was no room for application of the rules of the natural justice. The validity of that limitation is not questioned. If the purpose of the rules of natural justice is to prevent miscarriage of justice, one fails to see why those rules should be made inapplicable to administrative inquiries. Oftentimes, it is not easy to draw the line that demarcates administrative inquiries from quasi-judicial inquiries. Inquiries which are considered administrative at one time are now being considered as quasi-judicial in character. Arriving at a just decision in an administrative inquiry may have more far-reaching effect than a decision in a quasi-judicial inquiry as observed by this court in Suresh Koshi George versus University of Kerala. The rules of natural justice are not embodied rules. What particular rule of natural justice should apply to a given case must depend to a great extent on the facts and circumstances of that case, the framework of law under which the inquiry is held, and the constitution of the tribunal or body of person appointed for that purpose. Whenever a complaint is made the tribunal before a court that some principle of natural justice has been contravened, the court has to decide whether the observance of that rule was necessary for a just decision on the facts of that case. अगेन ये एक्सट्रैक्ट जो है वो केस लॉ से लिया गया है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए.के. कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिसीजन इन ए.के. कृपाल इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क अथॉरिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन?
There is no application of principle of natural justice to purely administrative functions. The principle of natural justice are in an ever evolving state of flux. The principle of natural justice do not differentiate between administrative and quasi judicial functions, or there is no application of the principles of natural justice टू क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। सी अगर आपको ये केस नहीं भी पता है तो अगर आप ऊपर जो एक्सट्रैक्ट पढ़ोगे उसमें भी क्लियरली लिखा है पैरा नंबर 3 में कि अराइविंग एट अ जस्ट डिसीजन इज द एम ऑफ बोथ क्वासी जुडिशियल इंक्वायरीज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। यहाँ से भी इससे हेल्प ले सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आपको केस लॉ नहीं पता है तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोर्ट स्टेट्स इन ए.के. कृपक दैट इफ द पर्पस ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस is to prevent miscarriage of justice, one fails to see why those rules should be made inapplicable to administrative inquiries. Which of the following approaches to interpretation of statutes does the government appear to adopt? तो इसमें हमारा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें थोड़ा हमें पैरा से तो हेल्प नहीं मिलेगी बट देन आपको अगर इंटरप्रिटेशन के रूल्स आते होंगे तो आप ऑब्वियसली इसको इंटरप्रेट कर पाओगे कि ये लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम एवरी वर्ड ऑफ लॉ को एक मीनिंग देते हैं, मतलब जो भी लॉ में लिखा होगा एग्जैक्ट उसकी मीनिंग जो भी होगी हम उसको मानते हैं। तो अगर यहाँ पे अब देखो इफ़ द पर्पस ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस वन फेल्स टू सी वाई दोज रूल शुड बी मेड इन एप्लीकेबल। तो यहाँ पे वर्ड को नहीं बट उसके पर्पस को देखा जा रहा है कि अगर ये पर्पस है नेचुरल जस्टिस का तो इस पर इनएप्लीकेबल क्यों होगा, राइट। तो यहाँ पे पर्पस देखा जा रहा है ना कि लॉ को लिटरली इंटरप्रेट किया जा रहा है। एंड वही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का भी मतलब होता है कि ईच वर्ड जो है वो इंटरप्रेट किया जाए लेटर बाय लेटर, मतलब जो लॉ में लिखा है जैसे लिखा है कि अगर नेचुरल जस्टिस जजेस पे एप्लीकेबल है कि जज अपने केस का जज नहीं हो सकता तो सिर्फ उतना ही इंटरप्रेट किया जाएगा। इसके अलावा कि इस पे लग सकता है उस पे लग सकता है ये सारी चीज़ें नहीं इंटरप्रेट की जाएंगी। लेटर बाय लेटर चलता है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में, तो ये क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। एनीवेज जो हमारा कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो एम करता है कि हम कुछ ऐसी यूनिफॉर्मिटी बनाएं जिससे लीगल सिस्टम के कैरेक्टर को हम वो देख सके। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप अज्यूम करते हो कि अगर लॉ ये कह रहा है तो इसका मतलब ये होगा, इसका पर्पस ये होगा, इसका इसने ये सोच के बनाया होगा लॉ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे एक कृपालन में बोला गया कि पर्पस अगर नेचुरल जस्टिस का ये है तो इसका मतलब कि ये इनएप्लीकेबल तो नहीं होगा, मतलब ये दोनों पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन लगी है, तो हमारा करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कोर्ट स्टेट्स इन ए.के. कृपक दैट in the course of years many more subsidiary rules came to be added to the rule of natural justice. Which of the following is later entrant to the principle of natural justice? No one shall be judged in their own case, duty to hear, duty to give reasons या none of the above। यहाँ पे भी ऊपर के पैरा से हेल्प ले सकते हो क्योंकि फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स आपको ऊपर पैरा में ही दे दिया था विच इज़ नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस एंड दूसरा बोला गया था कि नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ट, मतलब ये दो आपको दे दिए थे। जो कि पहला रूल बायस रूल एंड हियरिंग रूल होता है। हमारे नेचुरल जस्टिस में 3 रूल्स होते हैं, पहला बायस रूल, दूसरा हियरिंग रूल और तीसरा जो हमारा लेटर स्टेज पे आया था वो था रीजन्ड डिसीजन। तो रीजन्ड डिसीजन में क्या होता है कि अगर कोर्ट को कोई भी ऑर्डर डिसीजन या जजमेंट पास करता है तो उसको एक वैलिड डिसीजन देना होता है विथ रीजनेबल ग्राउंड्स कि वो ये ऑर्डर
क्यों पास कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नेचुरल जस्टिस होता है रीजन डिसीजन, और ये बाद में आया था, ये 2 रूल्स के बाद में आई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, ड्यूटी टू गिव रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट has recognized in several decisions that in cases requiring urgent administrative action or in exigencies, it may not always be possible to give full effect to the principle of natural justice without rendering the administrative action redundant in the circumstances. Which of the following is true for the requirements of natural justice in such cases? The administrator may choose to not follow principle of natural justice in case of emergency scenarios where time does not permit such compliance without recording their reason in writing. ये गलत है. Choose not to follow natural justice is no excuse कि emergency थी तो हमने natural justice नहीं किया. Next है, the administrator may choose to not follow principle of natural justice in case of emergency scenarios where time does not permit such compliance but must record the reason in writing. Yeah, the administrator may provide post-decisional remedy hearing wherever pre-decisional hearing is not possible. तो ऑब्वियसली इसमें आंसर हमारा सी करेक्ट है कि वो पोस्ट डिसीजन रेमेडियल कुछ दे दे जब भी प्री डिसीजनल हियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेस्टिंग वेदर द रूल अगेंस्ट बायस हैज़ बीन वायलेटेड courts often invoke which of the following standards? Likelihood of bias as perceived by fair-minded and informed observer, likelihood of bias as perceived by fair-minded and uninformed observer, likelihood of bias as perceived by third person, or likelihood of bias as perceived by persons involved in similar trade. तो इसमें तो अगर आपको लॉ नहीं भी पता है तो भी आप बहुत ही एक फेयर डिसीजन ले सकते हो कि एक फेयर माइंडेड एंड इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर का ही स्टैंडर्ड कोड फॉलो करेगा कंपेयर टू बाकी जो चॉइसेस हमें मिली है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट ही है. चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं. नेक्स्ट पैरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिस एस्टॉपल पे. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिस एस्टॉपल इज बाय नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल डिफाइंड बाय कैंटीना ऑफ डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट, where the government makes a promise knowing or intending that it would be acted on by the promise, and in fact the promise acting in reliance on it alters its position, the government would be held bound by the promise and the promise would be enforceable against the government at the instance of the promise, notwithstanding that there is no consideration for the promise and the promise is not recorded in form of a formal contract as required by Article 229 of the Constitution. The rule of promissory estoppel, being an equitable doctrine, has to be molded to suit the particular situation. It is not hard and fast rule by an elastic one, the objective of which is to do justice between the parties and to extend an equitable treatment to them. This doctrine is a principle evolved by equity to avoid injustice, and though commonly named promissory estoppel, it is neither in the realm of the contract nor in the realm of estoppel. For application of doctrine of promissory estoppel, the promise must establish that he suffered, indeterminate or altered his position by reliance on the promise. Normally, the doctrine of promissory estoppel is being applied against the government, and the defense based on executive necessity would not be accepted by the court. However, if it can be shown by the government that, having regard to the facts as they have subsequently transpired, it would be inequitable to hold the government to the promise made by it, the court would not raise an equity in favor of the promise and enforce the promise against the government. When the public interest warrants, the principle of promissory estoppel cannot be invoked. The government can change the policy in public interest. However, it is well settled that taking cue from this doctrine, the authority cannot be compelled to do something
which is not allowed by law or prohibited by law. There is no promissory estoppel against the settled proposition of the law. The doctrine of promissory estoppel cannot be invoked or for enforcement of a promise made contrary to the law, because none can be compelled to act against the statute. Thus, the government or public authority cannot be compelled to make a provision which is contrary to the law. अगेन ये एक्सट्रैक्ट एक केस लॉ पे बेस्ड है, सुप्रीम कोर्ट के, श्री सिद्धबली स्ट्रीट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिसीजन इन श्री सिद्धबल स्ट्रीट्स कार्व्स आउट द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन इन केसेस ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। टू विच काइंड ऑफ केसेस हैव कोर्ट्स रूटीनली अप्लाइड दिस एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पैरा से रिलेटेड नहीं है, ना इनफैक्ट कोर्ट से रिलेटेड, बट देन प्रॉमिसरी स्टॉपल पे एक जेनरिक क्वेश्चन है कि कोर्ट्स जनरली एक्सेप्शन कब अप्लाई करती है इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल मैटर्स, और फिजिकल मैटर्स मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे मैटर रिलेटेड टू टैक्स, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ। तो ऐसे मैटर्स पे जनरली गवर्नमेंट को एक्सेप्शंस मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क डिसीजन गवर्निंग द लॉ ऑफ प्रिंसिपल एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एंड इसके एक ऑप्शन में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस पे मैंने एक केस लॉ वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एनिमेटेड केस लॉ है ये भी, एंड ये भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस केस को तो एटलीस्ट क्लियर कर सकते हो इस वीडियो के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ फॉर प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट वुड बी हेल्ड बाउंड बाय प्रॉमिस एंड द प्रॉमिस वुड बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एट द इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिसी, notwithstanding that there is no consideration for promise and the promise is not recorded in form of a formal contract as required by Article 299 of Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट इन लाइट ऑफ द पैसेज। मतलब ये पैसेज रिलेटेड है और आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो एक बार तो रीडिंग आपको करनी पड़ेगी पैसेज की। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल स्टैंड्स डाइल्यूटेड वेयर गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इट इज़ in the public interest to go back on promise or action. The doctrine of promissory estoppel overrides any purported claims of public interest by the government. Yes, C, permitting a public interest exception is against the interest of justice, equity, good conscience, as it is well-serving claim for the government. या both B and C. अगर आपने पैरा पढ़ा है तो आपको ऊपर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल स्टैंड्स डाइल्यूटेड where the government claims that it is in the public interest to go back on its promise or action. आइए ऊपर देख भी लेते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। Where the public interest warrants, the principle of promissory estoppel cannot be invoked. The government can change the policy in the public interest. तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द लॉ। प्रॉमिसरी एस्टॉपल कैन नॉट बी इन्वोक्ड सो एज टू डिफीट द लॉ even if the representation is made by the government itself, but it does goes against the law. The estoppel can be invoked to defeat the law. If all the conditions of promissory estoppel are met, a challenge can said be made to the virus of the law या none of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, even if the representation is made by the government itself,
but it goes against the law, estoppel can be invoked to defeat the law. Next para है हमारा. In the second preliminary objections, Myanmar submits that the Gambia's application is inadmissible because Gambia's lack standing to bring this case before the court. In particular, Myanmar considers that only injured states, which Myanmar defines as states adversely affected by an internationally wrongful act, have standing to present a claim before the court. In Myanmar's view, the Gambia is not an injured state, a term that Myanmar appears to use interchangeably with the term specially affected state, and has failed to demonstrate an individual legal interest. Therefore, according to Myanmar, Gambia lacks standing under Article 9 of Genocide Convention. Myanmar draws a distinction between the right to invoke the state responsibility under general international law and standing before the court. It argues that even if it were established that a non-injured contracting party to the Genocide Convention has right to invoke another state's responsibility for violation of convention, this would not necessarily entail the right to bring a case before the court. To this end, Myanmar contends that there exists a difference between the common interest in accomplishment of the purpose of Genocide Convention and a state's individual legal interest that may be enforced through the intuition of the proceedings before the court. In Myanmar's view, only states specially affected by an internationally wrongful act have standing to bring a claim before the court. Myanmar further submits that the Gambia's claims are inadmissible insofar as they are not brought before the court in accordance with the rule concerning the nationality of claims, which according to Myanmar is reflected in Article 44A of International Law Commission's article on the responsibility of states for internationally wrongful acts. Myanmar asserts that the rule concerning the nationality of claims applies to the invocation of responsibility by both injured and non-injured states, and irrespective of whether the obligation breached is an erga omnes partes or erga omnes obligation. Consequently, in Myanmar's view, the Gambia lacks standing to invoke Myanmar's responsibility. Myanmar maintains that even if contracting parties that are not specifically affected by an alleged violation of convention are assumed to have standing to submit a dispute to court under Article 9, this standing is subsidiary to and dependent upon the standing of the states that are specifically affected. Myanmar argues that Bangladesh would be the most natural state to institute proceedings in the present case because it borders Myanmar and has received a significant number of the alleged victims of genocide. In Myanmar's view, the reservation by Bangladesh to Article 9 of Genocide Convention not only precludes Bangladesh from bringing a case against Myanmar, but it also bars any non-injured state such as the Gambia from doing so. Myanmar further argues that non-injured states may not override the right of a state specially affected by the alleged breach to decide how to vindicate its right in a way that would best serve its own interest. It's taken from an international case, the Gambia versus Myanmar. And अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. Hypothetically, if Gambian state was to exercise criminal jurisdiction over the persons responsible for crimes of genocide, then such jurisdiction would be called as extraterritorial jurisdiction, universal, contagious. A state cannot exercise jurisdiction over such crimes without having any connection with it.
टेरिटोरियल होता है जब कंट्री के अंदर बाउंड्री में आप कोई केस करते हो, दैट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो होता है आप कंट्री के बाहर करते हो, लेकिन आप अपनी आपके पास लीगल एबिलिटी है वो केस करने की, दैट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एंड देन कम्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो अलाउ करता है स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्लेम कर सके क्रिमिनल जुरिसडिक्शन ओवर एन अक्यूज्ड पर्सन रिगार्डलेस ऑफ वेयर द क्राइम इज़ कमिटेड। मतलब चाहे वो कहीं भी कमिट किया हो, आपको एक लीगल जुरिसडिक्शन वहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट करने की या कुछ करने की जुरिसडिक्शन मिल जाती है, तो उसे यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन कहते हैं। फिर होता है कंटेंटियस जुरिसडिक्शन, जहाँ पे दो स्टेट्स अपनी कंसेंट देते हैं किसी कोर्ट को कि ओके आप हमारा कोई भी केस होगा तो ये कोर्ट हियर कर सकती है। तो दो स्टेट से मतलब यहाँ दो कंट्रीज़ एक कोर्ट को अलाउ कंसेंट दे देती है कि ओके कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन, बिकॉज गैम्बिया का कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं बनता है, उसने कंसेंट नहीं दे रखा था, लेकिन यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन बन सकता है क्योंकि क्राइम कमिट हुआ है। एंड यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन के अंदर आप अक्यूज्ड पर्सन को रिगार्डलेस वेयर कहीं भी वो रिसाइड कर रहा हो या कहीं भी वो हो, क्राइम जहाँ पे भी कमिट हुआ हो उसको रिगार्ड नहीं देता है, इसलिए यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एर्गा ओमिस पार्टिस मीन्स obligation that are so integral to the subject and purpose of the treaty that no reservation or derogation are permissible. Obligation arising out of customary principles of international law that states have not objected to. Obligation essentially arising after gaining memberships of United Nations, या both A and B. इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस मैगजीन का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस दैट आर सो इंटीग्रल टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द ट्रीटी दैट नो रिजर्वेशन और डेरोगेशंस आर परमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 44A ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशंस article on responsibility of states for internationally wrong acts state that the responsibility of state may not be invoked if the claims is not brought in accordance with any applicable rule relating to nationality of claims. Can Gambia invoke principles of state responsibility against Myanmar for crimes of genocide? The answer is yes. The article has no relevance as genocide convention accepts the accomplishment of its high purpose. Next question है हमारा, Myanmar claims that the reservation by Bangladesh to Article 9 of Genocide Convention not only precludes Bangladesh from bringing a case against Myanmar, but it also bars any non-injured state such as the Gambia from doing so. Is this claim maintainable? Article 9. Disputes between contracting parties relating to the interpretation, application or fulfillment of the present convention, including those relating to the responsibility of a state for genocide or for any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नो इट डज नॉट अफेक्ट द लोकल स्टैंडर्ड ऑफ गैम्बिया एज बीइंग पार्टी टू द कन्वेंशन, इट हैज़ इट्स ओन राइट। और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्योंकि वो गैम्बिया को राइट्स नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, म्यांमार हैज़ मेड अ रिजर्वेशन टू आर्टिकल 8 ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन to restrict the competent organs of the UN to take action under the Charter of the Union as they consider appropriate for the prevention and suppression of the acts of genocide. Myanmar claims that since ICJ is the principal organ of the UN, there is a limitation of Article 9 and the claim is
Maintainable as a reservation explicitly prohibits the intervention of UN organs. Not maintainable as the Article 8 concerns the discretionary functions, which is different from judicial functions of ICJ. Maintainable as the two provisions of the treaty, that is Article 8 and 9, are to be interpreted harmoniously. Are not maintainable as ICJ as a successor of PCIJ is regulated by the statutes of ICJ and not the UN Charter. इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, not maintainable as Article 8 concerns the discretionary functions, which is different from the judicial functions of international courts of justice. तो यहाँ पे आज हम अपना सेशन एंड करते हैं एंड बाकी के क्वेश्चंस एंड पैराग्राफ्स जो भी है वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आई होप आपको ये पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशंस एंड एवरीथिंग. So stay tuned till the next part, and I hope you really want to watch the second part as well. So thanks for your patience and everything. Thank you.